is TVS Jupiter. Power your progress. अनिरुद्ध हालदार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस जुपिटर आज से 11 साल पहले 2013 में लॉन्च हुआ था। आज हम उसको रिवैम्प करके उसका फ्यूचर फोकस्ड वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। इस नए वर्जन में कम्प्लीटली न्यू स्टाइलिंग, नया सस्पेंशन, नया चैसी और एक नया इंजन जिसमें टीवीएस आईगो असिस्ट टाइप की नई टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कंज्यूमर को ना सिर्फ टॉर्क ऑन डिमांड मिलता है और अप टू 10% माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। और इसके साथ में ये एकमात्र 110 सीसी स्कूटर है जिसके सीट के नीचे डबल हेलमेट स्टोरेज रहेगा। और ये सब कुछ एक शोरूम कैलकाटा मात्र 77,200 से शुरू होगा। पूरा कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर को जीतने में है, तो हमारा फोकस हमेशा से कंज्यूमर पर रहा है और इसके आगे भी हमारा फोकस कंज्यूमर पे ही रहेगा। आज के दिन में भी टीवीएस iQube इंडिया का नंबर 2 ईवी स्कूटर है और उसको हम बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। 100 में से 20 ईवी स्कूटर जो बिकते हैं वो टीवीएस iQube हैं। सो वी आर द नंबर 2 ब्रांड इन इंडिया एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो इन दैट। हमारे लिए हमने आज से 2018 में टीवीएस एंटॉक लॉन्च किया था, जो 125 सीसी स्कूटर है, जिसको उसी सेगमेंट में बहुत सारा प्यार मिला है। वो उस सेगमेंट का नंबर 1 स्कूटर है और उसके अंदर 10 bhp पावर है। सो यंग राइडर हैं जिनको एक्साइटिंग राइड चाहिए, उनके लिए टीवीएस एंटॉक वुड बी द बेस्ट बेट। Technology meets convenience. Choice meets intuition. This is TVS Jupiter. Power your progress. Let's first look at the industry. In India, there are about 19.5 million two-wheelers that are sold every year, and 32% of them are scooters. In the last decade, the two-wheeler industry has grown by 4%, while the scooter industry has grown by 8%. TVS and scooter has grown by 12%, supported by a diverse and differentiated product portfolio. The TVS product portfolio in scooters is present across all consumer segments. The Jupiter 110 and Zest in the Jupiter 110cc segment, the Ntorq in the sporty scooter segment, and the Jupiter 125 in the Commuter 125cc segment. So with the Jupiter portfolio, we cover both the Commuter 110 and the Commuter 125cc segments. So TVS, as we've seen, that it has grown by 12%, and Jupiter portfolio, both Jupiter 110 and 125 put together, has grown by 24% on road. So within TVS Jupiter was launched in 2013, and with its launch, we redefined the scooter category with many of the first and segment features of external fuel fill, 12-inch alloy wheels, and many more features. And
And every year, the TVS Jupiter is reimagined to deliver on the promise of Zyada for the consumers. And with every one of these interventions, we will continuously push boundaries. And again, with the launch of Jupiter 125, we have redefined the segment with the first ever scooter with twin helmet space, front fuel fill, and many other features. Can we have the An idea that was born in 2013, the king of scooters, TVS Jupiter. A scooter that became the official carrier of dreams of every middle-class Indian. A scooter that was fueled by India's obsession with more. The year 2013 marks the beginning of a glorious journey. Within just 1 year, TVS Jupiter becomes the most awarded scooter ever. And the crowning glory of 2014, the launch of Scooter of the Year Special Edition. No scooter has reached the 5 lakh mark this fast. And the best part, the number 2 scooter brand in India. As the brand grew, the iconic Amitabh Bachchan took the hot seat. We celebrate the 10 lakh mark with the Million R Edition. A man with a timeless attitude needs a timeless ride. The Jupiter Classic Edition. As always, the first to launch a Bluetooth-enabled scooter, the Jupiter Grande Edition. 2021 gets bigger, better, and more powerful with the launch of TVS Jupiter 125. With first-in-segment features like double helmet space, front fuel fill, we redefine the scooter industry. TVS Jupiter gets best-in-class connectivity with TVS Smart Connect. 5 million happy riders now take the road on with a TVS Jupiter, fastest to reach this landmark. TVS Jupiter redefines smart with TVS Jupiter 125 SXC. TVS Jupiter achieves unprecedented growth. For us at TVS, Jupiter is not just a scooter, it's an emotion. And next decade will be all about reimagining more, creating more, innovating more, pioneering more. Here's to the next decade of being more.